हेलो, अभी आया नहीं सर। Good morning, sir. Hello, good morning. Good morning, all of you. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. To yesterday, two question Good number. morning, sir. Good morning. Question number 4 was done or not? Question number 4, exercise 5.1. Question number 4 is No, given. sir. It is remaining, no? Okay. Okay. Today, question number 4, exercise 5.1. The graph of question number 3 was drawn in your notebook. Yesterday, it was drawn. You have completed question number 3. Same, Yes, sir. from same question, same graph. The question is given in question number 4. क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ से ही क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 4 नंबर 4 में पूछा है. From the same graph you will reply that which group has the maximum number of workers. Answer 4.1. Which group has the maximum number of workers? You have seen the graph of question number 3. And which group have the maximum number of workers? Frequency is given. Which group frequency is maximum? You see your question number 3 solution. आप देख के बताइए. आपने कल ड्रॉ किया था. Sir, 9. ग्रुप Question number 3 किए थे. ग्रुप नंबर बताना है. 830, 840. ग्रुप नंबर बोलो. 830 और 40. 830, 830 to 840. Yes, sir. Having the maximum frequency, that is 9. Okay. And second, how many workers earn 850 and more? Students, without graph, I can't solve it. So first of all, संजय आंसर नहीं आए हैं. नहीं. जब मैं आता हूं तो समझ लेना सीधा सीधा वो नहीं आए हैं, तभी मैं आया हूं. Graph, without graph, you cannot reply question number 4. So graph should be here. Graph was like this, I think. Here 800 to 810. 810 to 820. Then after 30, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890,
and 900. 872, 880. Okay. Students, tell me, you have drawn the graph and the first group 800 to 810. What was frequency given? Maximum frequency was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Up to 9 it was given. This अभी is तुरंत चालू है दीजिए लिखना दो ना प्लीज दिस इज वेजेस. ये ग्राफ आपने पहले ड्रॉ किया है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर पूछा है उसी ग्राफ से. ओके, सेम ग्राफ से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मुझे फिर से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा है. आपने इसको क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रॉ किया है. एंड टेल मी 810 800 to 810 which what was the frequency? Any one of you, आप में से कोई ड्रॉ किया हो तो बताएं. 800 to 810 फ्रीक्वेंसी कितना था? See your graph. हाँ? 3. Very good. 3. Then after 810 to 820, 2. Okay. Now 2. And then one. then after 5. 1. Okay. 1. 820 to 830 frequency is 1. Yes, sir. Okay. And 830 to 814? 9. That is the 9. maximum. Okay. 9. Maximum frequency. Okay. And then after 840 to 805. Very good. 5. 5. And now, then 1. 1. Okay. Then 3. 3. Okay. 3. Then after 5. 1. 5. You told 5, na? 1. And then after 1, 2 times. 2 times, na? Yes, sir. Yes. Okay. And the last 4. 4. Okay. The graph, it is wages and workers, number of workers. Okay. Now you will the maximum frequency. Each group has maximum frequency. That is the 840 to 850. I have 30 to 50. 30 to 40 is written. 30 to 40. Okay. 30 to 40 is maximum. See, this is maximum. 30 to 40. And the second question is, from this graph, how many workers are 850 and more? See, 850. Wait. 850 and more here is written. 850 up to 850 and more will be this and this. This one, how much? 1. 10. Then after 3. Then 1 and 4. You add 850 and more will be 1 plus 3 plus 1 plus 1 plus 4. That is 10.
1, 3, 1, 1, 4. Add 1, 1, 1, 3 and 3, 6, 4, 10. 10, the answer will be second. How many workers? The workers, 10 workers earn 850 and more. Your answer will be 10 workers. Okay. And the third one, third part is how many workers earn less than 850? Students, see, before 850, this is 850 and more, and backside of the 850 are how, this is 3, this one 2, this one 1, this one 9, this one 5. You add all these, 5 plus 9 20. plus 3, 2, 20. 5, 1, 6, 20. 6, 20. 9, 20, 20 or 21. The 20. The 20. 20. This is 3 now. 20. 3. This one, Five. 2. 5, 6. 6. 6 and 9. 15 or 5. 20. 15 and 5. Okay, okay. The answer is 20 workers. 20 workers have less than 850 wages. The answer is clear. The solution is given. Have you understood, students? आपको समझ में आ रहा है? 2, 1, 9, 5, 1, 3, Reply me. 1, 1, 4. Have you understood or not? Or any doubt? Reply me. मुझे बताइए, आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now question number 5. Question number 5. The number of Question number hours 5. for which students of a particular class watch television during the holidays is shown through the given graph. The histogram is given for question number 5, and the question related is from this graph. The given graph is given in your book, and you have to reply by seeing the graph. Students, you can see the graph in your book. Yes, At sir. page number 77, graph is given for question number 5. I am reading question and you will reply. If you are understanding, then you will reply. For how many hours did the maximum number of students watch TV? See, at the x-axis, number of hours is written per day watching TV, and number of students are at y-axis. Now 4 to 4 to 5 For how hours. many 5 hours? hours. Maximum number of students. See, maximum number of students are 32 now. 32. Yes, sir. 32 class interval is 4 to 5. 5 So hours. your answer will be 4 to 5 hours. Maximum number of students watch TV for 4 to 5 hours. 4 to 5 hours. 4 to 5 hours will be answer for question number first of question number 5th first part. Answer is 4 to 5 hours. Understood? Yes, sir. Okay, you will reply yourself. Answer will be written by you. Okay. The second part, how many students watch TV for less than 4 hours? See the graph, less than students. See the graph, less than 4. 22. Okay. Okay. 34. Less than 4 hours will be added. You will add 22, 8 plus 4. 22 plus 8.
is 30 and plus 4 is equal to 34. Or 34, Yes, sir. 34 students Yes, sir. watch TV less than 4 hours. 4 hours से पीछे जो है, ये जितने आपको हिस्टोग्राम के बार दिख रहे हैं उस सबको जोड़ देंगे 4 आवर्स के पीछे वाले को, तो लेस देन 4 आवर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स 4 आवर्स से कम घंटे टीवी देखते हैं. ओके, एंड द थर्ड पार्ट, बोलिए आपको फर्स्ट और सेकंड समझ में आया? आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, यदि आपको में से किसी को डाउट है तो फिर पूछ लीजिए मुझसे. यू कैन आस्क मी अगेन. सेकंड क्वेश्चन में एक बार और सेकंड फिर से बताएं. ओके, सेकंड नंबर है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स. यू सी द ग्राफ, आप ग्राफ को देखिए. 4 आवर्स से पहले 4 to 5 जो लिखा है, यानी 4 के लेफ्ट साइड में जो कॉलम्स हैं उसको ऐड कर दीजिए. 22 + 8 + 4. 4 आवर्स से कम टीवी देखने वाले बच्चों की जो नंबर्स हैं वो 22 + 8 + 4 इज इक्वल टू 34 स्टूडेंट्स लेस देन 4 आवर्स टीवी देखते हैं. ओके, क्लियर? Yes, sir. थर्ड पार्ट, ओके, थर्ड पार्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से. हाउ मेनी स्टूडेंट्स spend more than 5 hours in watching TV? 46. 40. ऐसे निकालेंगे, एक मिनट, जिनको मालूम है थोड़ा आप शांत रहिए. 5 आवर्स से अधिक टीवी देखने वाले 5 के बाद वाले आप कॉलम को, यानी 5 के बाद वाले जो बार्स दिख रहे हैं उस पर जो नंबर लिखा है उसको आप जोड़ दीजिए. 5 आवर्स से अधिक टीवी देखने वाले बच्चे हैं 8 + 6. 8 + 6 is equal to 14. 14 students watch TV more than 5 hours. Okay? Yes, sir. आप आराम से सीखिए, 46. कोई हड़बड़ी नहीं है. जब तक आपको समझ में नहीं आता है पूछ सकते हैं. सेकंड वाला Now 5 का सेकंड 5 का सेकंड तो मैं एक बार और अभी बोला. आप देखिए 5 के सेकंड में लिखा है, सुन लो, 4 आवर्स से कम टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं. तो आप 4 जो कॉलम देख रहे हैं ना, 4 to 5 वाला जो 32 लिखा है उसको छोड़ दीजिए और उसके पीछे वाले को जोड़ दीजिए. 22 + 8 + 4, तो इसको आप जोड़ देंगे तो 34 आएगा. 34 बच्चे 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं. ओके, क्लियर? ओके, यही रात अकेला है. कंटेंट इज ऑलरेडी सेंड टू योर मोबाइल. कंटेंट मैंने भेज दिया है, आज ही भेजा. आपको होमवर्क के लिए कंटेंट इस एक्सरसाइज को दे दिया गया है. जो क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में कर लेंगे. और आई नाउ सर्किल और पाई ग्राफ. यू विल स्टडी टुडे अबाउट द सर्किल ग्राफ और पाई ग्राफ. सर्किल ग्राफ एंड पाई ग्राफ के बारे में आप पढ़ेंगे. सर्किल ग्राफ, और पाई ग्राफ. पाई ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? लिसन टू मी. ए सर्किल हैविंग हाउ मेनी एंगल्स? कंप्लीट एंगल इज 360 degrees. 360 degree. Complete angle forms 360 degree, and a circle having 360 degree angles. Among 360, you have to divide the given datas. Datas will be divided into 360 degree. How? One example
with the help of this example, it is easy, very easy to understand. See the student, the first pie chart in your book is given. रूटीन आप है, द टाइम स्पेंड बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे. एक बच्चा एक दिन में अपने समय का इस्तेमाल यूज कैसे करता है, हाउ ही यूज हिज टाइम. सी द फिगर, 8 hours, 8 घंटे वो सोता है. द स्टूडेंट स्लीप्स फॉर 8 hours. तो स्लीप के लिए, स्लीपिंग के लिए उसकी टाइमिंग जो है वो 8 hours है ना. 8 hours. 8 hours. Okay, for sleeping 8 hours, and for homework, HW, for homework he gives 4 hours. For play के लिए, वह प्लेइंग के लिए बच्चा अपना समय देता है 3 hours. For स्कूल के लिए उस समय he spent time 6 hours for his school. And for other works, नहीं चल रहा. other works के लिए, for other works he spent 3 hours. Hence 24 hours completed. 9, 3 are 12, 12, 24 hours. Total timing 24 hours. 24 hours. 24 hours is divided into 8, 4, 3, 6 and 3. You have to draw the pie chart of this data. How to draw? See, first of all, you'll write sleeping hours, and then after this is work, hours, and central angle. For drawing pie chart के लिए आप central angle find करे हुए हैं. How to find the central angle, students? It is important to understand. आप इस पर ध्यान दीजिए. Only see how to find the central angle. Don't write. 2 काम आप एक साथ मत करिए. लिखना और पढ़ना दोनों मत करिए. लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैं एग्जाम्पल बुक का दिया है उससे बता रहे हैं. सेम सेंट्रल एंगल के लिए जितने आवर्स ही दिया है, 8 hours आउट ऑफ 24, टोटल आवर्स 24, एंड 24 का 8 hours वो स्लीपिंग के लिए देता है. तो इसका सेंट्रल एंगल होगा, इसको 360 डिग्री में डिवाइड करना है. तो यू विल मल्टीप्लाई 8 by 24 to 360, and the simplification angle will be the central angle for sleeping. And you cut 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, and 2 4 ja 8, and 8 3 ja 24. 120. 8 4 3 ja 12. 120 degree. For sleeping angle, the central angle will be 120 degree, and the remaining you can find easily like this. See, here will be 4 upon 24 into 30, 360. It will be cut by 12. 12 2 ja 12 3 ja 30. And 2 2 ja and 3 2 ja 6, 60 degree. Likewise, this one 3 by 24 into 360 is equal to 3 8 ja 24 and 8. Cut this by 8. 8 4 ja 32, 48 5 ja 40 by 24. 2 times there is 3 by 24 into 360. You have already find out 45 degree. 45 degree. And those degrees, those will be. Hello. बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स?
Abhishek. Sir, your video is not coming. Sir, Sir, video is your not video is coming. not coming. The And video is not coming. voice also. But video and voice is not coming. Sir, your video and voice is not coming. Gaurav Singh. Sir, sir, video Sir, नहीं your आ video रहा and है. voice is not coming. Sir, your video and voice is not coming. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है. Sir, your video. गायब हो गया. Sir, your video and voice is Sir, your not video coming. and voice is not coming. Your video and voice is not coming. Video is not coming. Sir, your video and voice is not coming. Sir, your video and voice is not coming. Voice is not coming. Sir, नहीं आ रहा. सर, कोई दिख नहीं आ रहा है. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, students. Hello. Now video is coming. Yes, sir. उसी Yes, टाइम Okay, okay. sir. No, sir, बहुत नहीं, अभी आया है. का विषय आ रहा है वीडियो. सर फिर से बताइए, कुछ समझ में नहीं है. सर पाई चार्ट एक और बार समझा दीजिए. पाई चार्ट क्लियर नहीं दिख रहा है. What will be? ओके, पाई चार्ट या will सर be. सब पे बात बता दीजिए. हाँ, इसको पहले आप समझो. Listen to me. How to find the central angle? Is it clear or not? Central angle जो find किया गया है, क्लियर. it must be clear. पहले ये आपको समझ में आएगा तब पाई चार्ट बनाएंगे. Understood? How to find the central angle? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now I am drawing pie chart. Here. 24. Pie chart. For drawing pie chart, you will draw a circle. The circle radius must be not less than 3 centimeter or 4 centimeter. It should be nearly 3 or 4 centimeter. The rate. कौन सी है? 3 or 4 centimeter radius का आप circle बना लोगे. Okay. And now 120 degree for play. एक आपने रेडियस खींच लिया और पहला जो एंगल है 120 डिग्री, दैट विल बी ड्रॉ. 120 डिग्री आपने बना लिया. सपोज दिस इज 120 डिग्री. द एंगल विल बी ड्रॉन बाय प्रोटेक्टर आल्सो. नो प्रॉब्लम. आप प्रोटेक्टर का हेल्प से भी बना सकते हैं एंगल, कोई दिक्कत नहीं इसमें. 120 degree for playing, and the second one 60 degree. The alongside 60 degree will be drawn here. 60 degree. It is very easy. On this line, you can draw the 60 degree, and afterwards 45 degree. 45 degree will be draw here. After 60 degree, you will draw 45 degree. This one 45 degree. And then after 90 degree will be drawn on this line only, the last line, 90 degree. See, this is 90 degree and the remaining will be automatically 45 degree. Last angle will be no need to draw, it will be drawn automatically. Okay, this is for play or not sleeping. For sleep, this time 120 degree, and for homework 4 hours. Homework
4 hours homework HW, and then after 3 45 degree, 245 degrees are there. That is the others work, others, and 90 degree for 90 degree for school, and play. The last. This graph has been drawn in your book also, but how to draw this, how to find the central angle, I have given this, I solved this example. Okay, with the help of this example, you can draw the questions given in your exercise. समझ में नहीं है सर पाई चार्ट समझ में नहीं है तो समझ में सेंटर दिखा नहीं रहा, साफ नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? सेंटर एंगल सेंट्रल एंगल तो यहाँ है, मैंने निकाला है। There's 120 degree. See once again how to find central angle. To find the 8 hours, this 24 hour is divided into 1, 2, 3, 4, 5 activities of students. He is giving 8 hours for sleeping. So the central angle for 8 hours will be 8 upon total. Total time is 24 degree for a day. And 8 upon 24 is multiplied by 360 because the 360 is complete angle. That in 360, when 360 is divided into 8 by 4, 120 comes. After simplification, 120 comes. Likewise, for 4 hours, 60 degree comes. For 3 hours, 45 degree comes. The simplification is already done at the board. You can check it. आप इसको simplification check कर लीजिए, अपने से कर लीजिए. It is very easy. And how to draw this graph pie chart? First of all, you will draw a circle. Circle must be not very less radius. It must be 3 or 4 centimeter radius. One circle is drawn. Then after, the first angle is 120 degree. One circle and one radius. You will draw the first radius, and 120 degree on this radius will be first angle for sleep. This one. And after the one line of this angle, 60 degree will be drawn. See, 60 degree will be drawn at this angle, that below the 120 is for homework time. 60 degree angle is, we have find out 60 degree for homework. That is homework written. And 45 degree for 3 hours, that is other work. And 90 degree I have drawn here for school timing, and the remaining will be automatically drawn 45 degree for play. So all the remaining question are now from your try this question. मैच का क्लास का हो 4.1 पे कर Try this question are there. Try this question. See at page number 78 in your book, your textbook, page number 78. Try these questions are there. Try these questions. First question is, graph is drawn. You have to find the fraction. Find the fraction of circle representing each of the information. Okay, I am doing here on the board.
Page 78. Try this. Try this. Page 78. Question number 1. Part first. For first part, here diameter is drawn. Girls 50%, boys 50%. Girls 50% and boys 50%. You have to write the fraction. Find the fraction of circle representing each information. For fraction will be what? Fraction for boys. Boys, fraction is 50 out of 50% out of 100%. That is 1/2. Fraction will be 1/2. 50 1 ja 50, 50 2 ja 100. And fraction for girls. Girls will be 50 by total, 50% by 100% is equal to 1/2 fraction. Okay? Fraction written. Likewise, second part will be drawn, written by you. आप देखिए सेकंड पार्ट को कैसे आप करेंगे. सेकंड पार्ट, the circle is here. Walk 40%. Then 20% cycle. Cycle figure is drawn in your book. आप अपने बुक से फिगर देख सकते हैं. बस और कार. Bus or car is 40%. See, the student, from this figure,